is different from other programming languages. So, first, Python is easy to learn and Python is good for starting out because the syntax of Python is very simple and understandable. So we can create graphical user interfaces and computer graphics interfaces in a few lines of code. Okay, so these are the characteristics of Python programming language. So next is who uses Python? So Python is used for developing many popular web products like YouTube, Google, Yahoo Map, etc. So next we are going to discuss that how the Python is different from other programming languages. So Python is compared with the most liked programming languages like Java, JavaScript, Perl, C++ also. So we will find Python is good language for development. So first we compare Python with Java programming language. So the first difference is Python programs run slower than Java, whereas Java programs runs faster than Python. And Python programs takes less time than Java, whereas Java takes more time for developing the same program. ओके पाइथन प्रोग्राम को हम कम टाइम पे रन कर सकते हैं, जबकि जो जावा का प्रोग्राम है वो काफ़ी टाइम लेगा रन होने के लिए. सो पाइथन का जो कोड होगा वो 3 to 5 टाइम शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू जावा कोड, वेयर एज द जावा कोड इज लॉन्गर दैन पाइथन. ओके, नेक्स्ट डिफरेंस इज पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज. इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ता है दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर. अगर हम बात करें सी और C++ लैंग्वेजेस की, ठीक है, बट पाइथन में क्या है, पाइथन में क्या है कि अगर हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पहले डिक्लेयर करें. ओके, सो पाइथन डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इवन इफ वी डोंट डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल. ठीक है, हम पाइथन में वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, उनको डिक्लेयर करना ज़रूरी नहीं होता. सो दिस इज़ अ मीनिंग ऑफ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज, whereas Java is not dynamically typed. इसमें क्या है कि हमें अगर वेरिएबल को कोई वैल्यू साइन करनी है तो हमें डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्ट्रिक्टली उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, अदरवाइज हम वेरिएबल को वैल्यू साइन नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज हाउ द पाइथन इज़ डिफरेंट फ्रॉम जावास्क्रिप्ट. सो पाइथन इज़ एन ऑब्जेक्ट based programming language, whereas JavaScript is also an object based scripting language. Next difference is Python can be used as a scripting language as well as a programming language, whereas JavaScript is only used for the scripting language. Next, how the Python is different from Perl language. First one is Python is very close to Perl, whereas Perl is also very close to Python programming language. So Python support common programming methodologies such as data structure and object oriented programming, whereas Perl supports common applications oriented tasks like built-in regular expressions, file scanning and report generating features. Next difference is how the Python is different from TCL. So the first difference is Python is a general purpose language programming language, and TCL is application extension language and standalone programming language. Python has a rich database, data types सेट फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़. ठीक है, पाइथन में क्या होता है, डाटा टाइप्स की लार्ज वैल्यूज़ होती हैं फॉर स्टोरिंग वैल्यूज़, वेयर एज TCL स्टोर्स ऑल टाइप्स वैल्यूज़ इन अ स्ट्रिंग, मीन्स TCL इज़ वीक इन डाटा स्ट्रक्चर. ओके, मतलब कि जो है पाइथन उसमें हम डाटा स्ट्रक्चर को वाइडली यूज़ करते हैं, जबकि इस रिगार्डिंग जो TCL है दैट इज़ वीक. नेक्स्ट इज़ प्रोग्राम पाइथन प्रोग्राम एक्सिक्यूट फास्टर as compared to TCL program. Okay, but TCL program executes slower than Python program. Next difference is Python supports module for writing large programs in a small module. ठीक है, Python में क्या है, हम किसी भी big प्रोग्राम को, लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट TCL also has lack of modules for writing a large programs. Next difference is how the Python is different from Smalltalk.
सो पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। इसमें हमें वेरिएबल को कोई वैल्यू साइन करने से पहले उसको डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। वेयर स्मॉल टैग इज़ नॉट डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन्स लाइब्रेरी हैज़ मोर फैसिलिटीज़ फॉर डीलिंग विद द इंटरनेट एंड WWW realities such as HTML and file transfer protocol, whereas Smart is standard library of collection data types is more refined. Next difference is between Python and C++ language. So first difference is Python code is 5 to 10 times shorter than C++ code. ठीक है, हमें सिर्फ 3 to 5 लाइन्स का कोड लिखना पड़ता है पाइथन में, whereas C++ code is 5 to 10 times longer than Python code. ठीक है, इसमें जो कोड की लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है as compared to Python. So Python is pure OOPS programming language. OOPS means object oriented programming language, and whereas C++ is not a pure OOPS programming language. So this is the difference between Python and other languages like Java, C++. So that this we cover the topic like how the Python is different from other languages.